देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा। मैं कंजूस पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा। ये कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस ले आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे। मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा। आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे। आपका काम है अपनी सरकार अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना, हमारा काम है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म। हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा। भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे। बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत। हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है। मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है। सुबह से 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़। आप चला लें एक महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म। ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज, वो आ जाएगा जजमेंट नंबर 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इसको देख लेंगे। आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था, इसके बावजूद के स्टे चल रहा है। मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है। अलग बात है आइन कानून पर स्टे चल रहा है, फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें। मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है। हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें परसुएट कर लीजिए। और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला। My lord, my learned friend is questions. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. My lord. I'm not engaging in theoretical argument. My lord. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, if it so happens, yes, not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. Learned This is in Parliament's competence, and if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have as Attorney General. Ji, absolutely. Yes. Okay. Mr. AG, to your right. Section 2 it provided that the bench, constitution of the bench. Suppose bench is constituted. Who will assign the cases to the benches? Still this power has not been given in this act. Again, there will be... My lord, the committee determine its procedure and then it with regards to how the meetings are to be, the committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more, if 2 members, senior members comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? What would we do if this situation occurs? My lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure, which would have included when and how the meetings were to be held and the constitution of benches, etc. But that never happened because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so with regret, was a first. My lord, this is exactly what under subsection 2 the committee is to do. As the first, we will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is, an SRO or as a rule or whatever they call it, but the committee can determine its procedure. It will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, section 3, my lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing
that the committee is to first see whether the matter is, it has to come before the committee to determine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench that would this not be an administrative power controlling a judicial function?